So hi guys, welcome back to the next class. I first of all apologize for being late in uploading the video. I'm sorry because I was unwell, but still it was my job. I hope to complete it in the stipulated time. And so the things which we will study in the next few minutes is first of all the theories, which is monist, dualist and modified dualism. Also another type of theory which stipulates the integration of international law into the municipal sphere is the doctrine of incorporation, transformation and delegation. Certain case laws as well which are involved, and the state practices which involve US, UK and India. We'll start by giving an example, which is of the Environment Protection Act. It was a law which was passed by the Indian Parliament, but it is based on the CBD, which is the Convention on Biological Diversity. So this is the perfect example of how international law is incorporated into municipal law by Parliament, right? Next is your homework to read Article 27 of the Vienna Convention. Read it and write about it in comments. Next are the theories. First is positivism and dualism. So basic differences between the concepts through the positivist and dualism theories and the dualist theories is the source of municipal law is collective will of individuals, and international law it is collective will of states. It is written there that if we have to determine the source of international law, then it will be the collective will of states. For municipal law it will be the collective will of individuals, right? Then the subject. For municipal law it is individuals, for international law it is the states. The subject matter, which is very important to be looked upon, is relations of individuals with each other and relations of individual with the state at the same time. So it is a dualistic concept which we have to understand here, that subject matter of municipal law is relation of individuals with states, and for relation and for the international law it is the relation between states where the focus is to regulate the conduct of the states. That is important to understand here, guys, because right, if it's very well written here that the relation between states where the focus is to regulate the conduct of the states in the positivist theory, right? Both international law and municipal law operate in different spheres, so there is differentiation between international and municipal law, that they both operate in a different sphere, right? This is international and this is municipal law according to what? Positivism or dualism. So dual spheres, just remember there are dual spheres in the concept of dualism, right?
Then in monism there will be single sphere, right? But the hierarchy is different. As it is written here, this will be an upward slope, right? In the this particular pyramid, in the bottom there is international municipal law, then international law, and then natural law. So what do monists argue? They argue that international law and municipal law do not operate in different spheres. On the contrary, they are a part of same legal order. On the head of the order is the natural law, which creates international law. Through IL, international law, the state comes into existence. So it's a very big argument here that the existence of state is through international law. It is a very good point which you have to write in your answers. In answer, please. It will help you to gain more marks, and that is at the end the whole requirement. The very existence of state is therefore a gift of international law. Municipal law, which is created by the state concerned, is therefore subservient. Subservient matlab under IL, मतलब उससे कम है under international law. The monists therefore have clear hierarchy of laws wherein international law is superior to that of municipal law. The monists finally assert that if there is any conflict between international law or municipal law, the former will prevail. That means international law को ऊपर माना गया है, ठीक है, याद रखिए. Then कुछ हैं एक्सट्रीम राइट में, कुछ लोग हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, और कुछ हैं इन बिटवीन, यानी कि मध्यम मार्ग. Right? So first is the approach of Mr. Kelson, which is monist positivist, and then we'll study Mr. Lauterpacht. Beautiful thinkers. The way they thought about world is very important, and their arguments have been in frenzy for a longer period of time, as I can remember. In the monist positivist approach, international law is automatically incorporated within the state because the states have consented to it, right? That means if there is no consent, there is no incorporation of international law, right? That is the argument of monist positivist thinkers, of which the best proponent is Mr. Kelson, right? So as regards to the monist positivist approach by Kelson, international law is automatically incorporated within the fold of municipal law because the states have consented to it. Consent is the key, which some people somewhat forget in our society, which is sad. थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ दोस्तों. Therefore, international law will invariably be superior to that of municipal law. राइट, ठीक है. इंटरनेशनल लॉ हमेशा ऊपर रहेगा मोनिस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में. अगर पूछें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्कोप पे क्वेश्चन आए, ठीक है, या रिलेशन पे क्वेश्चन आए, तो आप ये दो अप्रोच ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इन अप्रोच की बात लोग करते हैं नहीं अपने आंसर्स में, तो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच कराएंगी. फिर लाउटरपैक्ट साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि स्टेट is a community as a whole, right? And human rights की सबसे ज़्यादा बात करी गई है मोनिस्ट naturalist approach में. I don't know why I'm fumbling, really sorry. Naturalist, yeah, now it came better. Naturalist approach में ये बात करी गई है कि ह्यूमन राइट्स को सबसे ज़्यादा अंदेशा दिया जाएगा, ठीक है, और स्टेट को कम्युनिटी एज अ होल माना जाता है, और अगर स्टेट को एग्जिस्ट करना है तो ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा. एंड ही सेज
the best protection to human rights is to be done by international law. Within the fold of Monism, Lauter Pact is considered to be foremost proponent of monist naturalist school, wherein it is argued that every law intends to protect human rights and international law is the best solution to uphold human rights. Justice Subbarao in Golaknath case held that as regards human rights is concerned, we need to borrow it from international conventions even in the absence of municipal law. The criticism is suspicion of one law over the another. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है कॉन्स्टी की, आईसी गोलकनाथ. ठीक है, उसके बाद इसमें बात मतलब आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, कवि ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करना है तो आईएल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आईएल की डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सस्पिशन ऑफ वन लॉ ओवर दी अनदर, इसमें म्यूनिसिपल लॉ को आईएल के ऊपर माना गया है. क्यों माना गया है ये हमें समझ नहीं आता. ठीक है, बट क्रिटिसिज्म यही है कि माना क्यों जा रहा है इंटरनेशनल म्यूनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ के ऊपर. एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों कि विच इज़ नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड ड्यूलिज्म. जेराल्ड फिट्जमॉरिस जी ने लिखा था. इसमें बोला कि आईएल एंड एमएल ऑपरेट इन डिफरेंट स्फेयर एंड ईच इज़ सुपीरियर इन इट्स ओन स्फेयर. मतलब कभी ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग स्फेयर हैं लेकिन अपना अलग अलग स्फेयर में अपने ये दोनों एक दूसरे से सुपीरियर हैं. ठीक है, मैं आपको ड्राइंग करके समझाना चाहूँगा. ठीक है, ये दो स्फेयर हैं. इंटरनेशनल लॉ इज़ ग्रेटर देन म्यूनिसिपल लॉ और एक में म्यूनिसिपल लॉ इज़ ग्रेटर देन इंटरनेशनल लॉ. इसमें सारे मतों को डाल दिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं. जैसे हनुमान जी होते हैं ना, जो हनुमान जी वो पहाड़ उठा के ले आए थे, ठीक है, तो इन्होंने पहाड़ी उठा लिया, दो पहाड़ पर उठा लिया यहाँ पे इन्होंने. ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कभी. देखिए, एक और अप्रोच है विच इज़ दी हार्मोनिस्टिक अप्रोच. एज पर दिस थ्योरी अप्रोच, बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ should complement each other. It is incorrect to say that international law versus municipal law. On the contrary, it should be international law and municipal law. इसमें ये कह रहा है कि कोई बैर नहीं है भाई, दोनों भाई भाई हैं. ठीक है, आईएल एंड एमएल भाई 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 भाई, that means brothers, right? There should be harmony between both of these spheres. That is what this approach tries to say, right? Now we'll revise the whole thing. पहले हमने पढ़ा पॉजिटिविस्ट या ड्यूलिस्ट, इसमें दो अलग स्फेयर थे. फिर मोनिस्ट या नेचुरलिस्ट, इसमें एक पिरामिड था. फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया मोनिस्ट पॉजिटिविस्ट में और मोनिस्ट नेचुरलिस्ट में. ठीक है, और एक और आया फिर एट द एंड जो थे माशाल्लाह हार्मोनिक, और एक थे मॉडिफाइड. तो हमने ये मानिए 10 मिनट में पूरा कवर कर लिया है आईएल और एमएल की थ्योरीज. ठीक है, अब आप इसको पेपर में लिखेंगे ना जब, तो सिर्फ ये दो चीज़ें मत लिखिएगा, ये इनकी अगर एक एक लाइन भी अगर आप लिख देंगे ना तो +1 और 2 मार्क्स 100%. क्योंकि एग्जामिनर भी ना, आप देखिए, आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी देखिए, साइकी देखिए कि वो बोर हो जाएगा भाई पढ़ के एक ही चीज़. ठीक है, आप ये नई चीज़ लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब है इंटरनेशनल लॉ इन म्यूनिसिपल स्फेयर को हम पढ़ेंगे. इसमें भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बहुत इजी हैं और आगे बहुत काम भी आएंगी आपके केसेस में. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेलीगेशन. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इनकॉर्पोरेशन को ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं क्योंकि मिस्टर ब्लैकस्टोन ने लिखी थी. इसमें ये कहना जा रहा है कि कभी ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ होगा ना, आईएल होगा ना,
वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली म्यूनिसिपल लॉ के स्फेयर में आ जाएगा। मतलब किसी भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ, आइडियली क्या होता है, अगर किसी लॉ को एक भारत जैसे इंडिया में कोई लॉ बनना है तो पार्लियामेंट बिल पेश करती है, पास होता है, ठीक है। लेकिन इस अप्रोच के हिसाब से बिल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। देन इज़ दी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। इसमें ये कहना चाहता है कभी कि इंटरनेशनल लॉ प्रोमिसेस पेश करता है, ठीक है, इसमें कमांड और सैंक्शन होती है, लेकिन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ टू मेक अ लॉ, दैट मीन्स pass a legislation to incorporate the laws which were given in the international law to the municipal law, right? So these are the two main theories. मैं इनके आपको थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ाता हूँ। दिस कैन बी थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्ट और लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। पहले मैं ऑटोमेटिक इनकॉर्पोरेशन थ्योरी पढ़ाता हूँ। इट आर्ग्यूज दैट इंटरनेशनल लॉ इज बाय इट्स वेरी नेचर automatically applied within the realm of municipal law without there being any requirement to pass a legislative enactment to perform or preform an executive act. The above theory is influenced by William Blackstone's commentary on laws. देखिए अगर आप ये आंसर लिख रहे हैं और इसमें आप बुक का नाम लिख देंगे, ये टीचर कैसे इम्प्रेस नहीं होगा यार, नंबर मिलेंगे, यही लिखना होता है, ठीक है। That Blackstone argues that law of nations is automatically part of common law of England and therefore it does not require any legislative or executive act. यही जो मैंने आपको समझाया है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अनलेस प्रोमिसेस आर नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू कमांड आई एल हैव नो इम्पैक्ट। मतलब आई एल एक प्रॉमिस है, ठीक है, आई एल एक प्रॉमिस है, उसको कमांड बनाना है अगर, ठीक है, उसको कमांड बनाना है अगर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कभी ये कह रहे हैं कमांड अगर बनाना है तो लॉ पास करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू पास अ लॉ इन रिस्पेक्ट टू दिस इंटरनेशनल लॉ, it should be passed by the parliament or through executive act. Understood? So that is the scene. Next we'll come on to the delegation theory, right? It states that international law delegates to state the right to legislate at municipal level. There is no transformation, but there is only one, but rather it is the part of only one unified sphere. This theory condones transformation theory and accepts incorporation theory. It states that international law delegates to state the right to legislate at municipal level. There is no transformation, but there is only one, but rather it is a part of one unified sphere. दोस्तों इसमें ग्रामेटिकल दिक्कत है, ठीक है। इसमें कभी ये कहना चाह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो स्टेट को डेलीगेट करता है टू द पावर टू लेजिस्लेट अ लॉ इनटू डोमेस्टिक स्फेयर, ठीक है। बस आपको ये लिखना है दैट इंटरनेशनल लॉ इन दिस डेलीगेशन थ्योरी delegates its power to lawmakers, domestic lawmakers, to make a law in domestic sphere. So that is the Kavi saying here, right? This theory condones and accepts transformation theory and accepts incorporation theory, ठीक है। इसमें ये theory ये accept कर रही है। Understood? Any doubts, let me know. I'll see you in the next class. Don't forget to like, share and subscribe. Have a great day and sorry for uploading this late. Thank you. All the best.